the last word, and I'm Maria Shakil. Mahayuti suffered losses in the Lok Sabha polls, and after that, Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde has said that this was because of the opposition's claim that the constitution would be amended and caste-based reservation done away with if the BJP returned to power. Remember, the BJP had that slogan of 400 Par, which now the Chief Minister of Maharashtra says created misconceptions in people's mind. This is coming 2 days after the NCP refused to join the Modi Council of Ministers, saying they were offered the MOS berth instead of a cabinet. With the assembly elections just 3 months away, the Mahavikas Aghadi partners too are flexing their muscles, holding unilateral meetings which are being seen as creating some kind of discontent. What exactly is the truth? What's really is happening in Maharashtra? A quick wrap, and then I bring in the newsmaker. Maharashtra's pot boiler continues to simmer after the Lok Sabha results of the 48 seats in the state. The focus now is on the assembly polls later this year. Shiv Sena UBT was in a huddle at the Sena Bhavan with Uddhav and all leaders in attendance. All is not well in the Mahavikas Aghadi camp. Congress has expressed displeasure over Uddhav Thackeray's Shiv Sena unilaterally announcing candidates for the upcoming Legislative Council election. But Uddhav Sena maintains that there is no dispute and that they are working together for the assembly elections. आज की बैठक अहम इसलिए थी कि शिवसेना जो 288 विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी इस महाराष्ट्र में है, 288 जगह के लिए शिवसेना के संपर्क के लिए प्रमुख शिवसेना ने अपॉइंट किए हैं, क्योंकि आने वाले समय विधानसभा जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें तैयारी हमारी अच्छी तरीके से पूरे 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में होनी चाहिए. हम तो अलायंस से लड़ने वाले हैं, लेकिन ताकत हमारे हर जगह होनी चाहिए. इस हेतु से मीटिंग हुई. On the other side, NCP was in damage control mode over what it termed as the opposition's false narrative of internal disputes. परवाच्या दिवशी आमदारांची बैठक झाली. सगळे आमदार उपस्थित होते. डॉक्टर शेंगणे नव्हते कारण त्यांच्या सख्या चुलती वारल्या होत्या. त्यावेळी नव्हते, पण कारच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने होते. डॉक्टर बाबा आत्राम यांचं ऑपरेशन त्या ठिकाणी झालेलं होतं. सुनील अण्णा बनसोडसुद्धा घेऊन गेलेले होते. पण केवळ मुद्दाम होऊनच काहीतरी एक नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. But clearly, all is not well in NDA alliance in Maharashtra. After losing to the opposition MVA, discontent and disappointment have been escalating among allies. Ajit Pawar-led NCP secured only 1 seat out of 4. The party demanded a cabinet berth but was denied. I did have a reservation to accept a MOS independent charge as it would be for me personally coming down or demotion. In contrast, the Sena won 7 out of 15 seats. Eknath Shinde too sought a cabinet berth and 2 MOS positions, but was just given 1 MOS berth. मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. Meanwhile, rumblings about Ajit Pawar NCP and Shinde Sena MLAs being in touch with MVA is growing stronger. There were also rumors of Uddhav Thackeray joining the NDA, which was rubbished by MVA leaders. उद्धव ठाकरे जो स्टेज पे बोलते हैं वही काम करते हैं, उसी दिशा से काम करते हैं. मुझे पूरा यकीन है कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही हमारी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ेगी. The Mahayuti too has rubbished talks of their MLAs being in touch with the other camp. आणि जे सातत्याने बातम्या देण्याचा प्रयत्न मीडियामध्ये आम्ही पाहतोय की कोणतरी आमचे विरोधक सांगतात की ह्यांनी संपर्क साधला, त्यांनी संपर्क साधला. असं काही झालेलं नाहीये. सगळे आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमच्याबरोबर आहेत. MVA has clearly come out stronger post Lok Sabha election despite splits and realignments that it faced. On the other hand, power struggle in Mahayuti continues. The alliance needs to iron out differences ahead of assembly elections. Otherwise, similar problems like seat realignment, seat issues and coordination problems will continue to haunt them and affect their performance in assembly elections as well. With video journalist Sunil, this is Radhika Ramaswamy for NDTV Mumbai.
And let me go straight to senior Congress leader and former Maharashtra Chief Minister Prithvi Raj Chavan, who's joining us live. Mr. Chavan, really appreciate your time here on NDTV. Despite this emphatic victory of Mahavikas Aghadi in these elections, what appears at the moment is some kind of discontent, or should I say simmering discontent, over what is being seen as unilateral decisions by your alliance partner Shiv Sena, Uddhav Thackeray. No, don't read too much into it. You see, after the election, Uddhavji and I think some senior colleagues went to London. I mean, we can't fault them for that. And therefore, there was some difficulty in coordinating it, but it's been sorted out immediately. There is no discontent in Mahavikas Aghadi. We have registered an emphatic victory, which we expected to get. 1 or 2 seats we lost. I think we lost Konkan Belt, which we'll have to introspect. Shiv Sena will have to introspect. There is absolutely no rumbling at all. I mean, you saw recently there was some poll done by one television channel, which has shown Mahavikas Aghadi to be clearly leading the Vidhan Sabha election. We will form the government. We are in quite an upbeat mood. And on the other hand, you know what is happening in the Mahayuti, but I don't want to talk about that. There is a government in Delhi, and we are going to play a role of a principal opposition party, or the India Alliance will play the role of a strong opposition party in Delhi. We'll have a leader of opposition for the first time. And I think we are prepared to contest the assembly elections which happen in October, that is Haryana, Maharashtra, 2 major states. Okay. In Mr. Maharashtra, Chavan, we will contest as a Mahavikas Aghadi. okay, since you are very clear that whatever differences you may have will be ironed out in coming few days, because 3 months down the line, you have the crucial assembly elections in Maharashtra. And given the kind of numbers that you have won this time around in Lok Sabha, I'm sure you're hoping to replicate or win similar numbers in assembly and form the government. But the larger question is also, is there some sense that because the Congress had the best strike rate among the alliance partners, better than Uddhav Thackeray, Shiv Sena, or Sharad Pawar, NCP, you should be getting more seats to contest? Well, technically, Sharad Pawar's Shiv Sena, Sharad Pawar's NCP had a slightly better strike rate than us. They got 8 out of 10. We got 13 out of 17 officially, then 1 independent that joined us. So both strike rate of NCP, Sharad Pawar group and us were more or less similar. But we got highest number of seats. We are the largest party in the Lok Sabha among the opposition camp and MVA camp. So we're happy about it. We have scored victories in 150 segments in Maharashtra, roughly. And so that will translate into victories in Vidhan Sabha also. We will get a clear majority for the MVA. Now, of course, the seat sharing talks within the MVA is not going to be easy. We all realize that it's going to be, quite a uphill task for us. But we hope to complete it by July end. Okay. And I think just like in Lok Sabha, Congress party took a sort of backward street, a couple of seats which we wanted to contest. We could not contest them. But I think this time, since we are the largest partner now, and we know the segments that we have won, Shiv Sena has won some segments, NCP, Sharad Pawar has won some segments. So those segments perhaps will lay claim to them. Okay, so you are essentially saying, Mr. Chavan, that because of Congress party's performance overall in these Lok Sabha elections, the rules of engagement for the assembly elections will be different. You will not be, playing the role of a junior partner that you did in Maharashtra? Well, let's not get into numbers of junior, senior, bada bhai, chota bhai talk. I mean, we will select the constituencies where a component of the MVA has a good candidate. So winning candidate is the primary criteria. At the same time, each party wants to increase its strength. There's nothing wrong in that. But that's the beauty of coalition politics. I think we will definitely do that. I'm sure we'll perform well. In this election, we performed well. Our coordination between the 3 partners was very good. But really, we must thank Mr. Modi. It is more than our victory, it's the defeat of Mr. Modi, because the way he handled the agriculture crisis, the economy is in shambles, the unemployment, the Mahangai, of course, the Samvidhan Bachao,
They saved the constitution, really ran with the people, and the mess that they made about the Maratha reservation, particularly Mr. Devendra Fadnis, he had to pay a price for that. But there are a lot of learnings from the Lok Sabha election. We'll introspect, although we have done well, we'll introspect and find out what more we could have done. And the ultimate objective is to win the Maharashtra Assembly. Okay. Before I let you go, Mr. Chavan, will the Mahavikas Aghadi be entering this election with a face? Will you be announcing the chief ministerial face before you go into the elections? Absolutely not. I don't think we'll do that. The time-honored formula in Maharashtra is whichever party gets the highest number of MLAs get the chief minister's post. Now, this is the three-party alliance, so perhaps it could be one or two deputy CMs, and then portfolio sharing will happen. Because let me tell you, first time in Maharashtra, three parties in two alliances have fought each other. We used to fight two parties in each alliance, Congress and NCP on one side, and Shiv Sena and BJP on the other side. Now there are three parties. So alliance talks, seat-sharing talks are not that easy as before. But we'll sort it out because we know that because three of us fought together, we won the Lok Sabha election decisively. All right. I think the same formula. All right, Prithvi Raj Chavan, thank you so much for joining us. Welcome. And setting the record straight, I would say, on top of the show here on NDTV. Let me bring in my guests now. Brij Mohan Srivastava is the national spokesperson of NCP Ajit Pawar faction. Asif Bamla, spokesperson of the BJP Maharashtra. Sanjay Gupta, leader of Shiv Sena Uddhav Thackeray faction. I'm going to begin with you, Asif Bamla. There is lots happening in Mahayuti, but I think it's your party which has much to explain because, this entire slogan of 400 Par was yours. Well, it's nothing wrong to have a bar set for yourself, a higher end bar that we will cross this mark, and if at all we have not been able to cross that mark. Even the Congress themselves said that we are going to go more than 200. They couldn't even cross 100. But nobody's questioning them. It is everybody who is questioning us. See, when a student appears for an examination, he expects 90% results. But if he has got distinction, people are not welcoming that distinction. But people who have got just 36% marks, they have been lauded to the glory. Okay, let me ask Brij Mohan Srivastava because, let me rebut 2 minutes. Mr. Shinde and so that's not how it works. You see, you have to take the demographics of the election. Every election is different. Lok Sabha is different. In Assembly, it's going to be different. Now you tell me, in 2019, in all the 5 states, BJP fell very badly, miserably. But in Lok Sabha elections, we swept the polls in the last Lok Sabha So let me ask Brij Mohan Srivastava. Brij Mohan Srivastava, we are being told, and in fact the NCP has gone on record to say, the Sharad Pawar NCP, that several of the Ajit Pawar MLAs and those who are seen as leaders close to him are in touch with Sharad Pawar ji. So is that a sense that there could be some more, realignments before the elections? Are you not able to keep your house in order? It's simply a rumor. Any MLA is not in touch of any other party leaders. We are having our meetings with the MLAs. MLAs are meeting and they are coming to meet our leaders in the Maharashtra. So I think it's a simply rumor. There is no realignment with any other faction. No, but then what is the need of a photo opportunity like this, where you have Shinde on the driving seat and the 2 deputy chief ministers behind him? So what wrong is in it? Mr. Shinde is working well and we are working with him. So I personally feel there is no difference between the Devendra Fadnavis Sahab, Eknath Shinde Sahab and Ajit Dada Okay, Pawar. so there are no differences. And despite that, Mr. Devendra Fadnavis offered to resign. He said that he takes the responsibility of the poor performance of the BJP, and then despite that is the introspection that the BJP the introspection, fine. So Sanjay Gupta, the introspection is happening on the other side. You guys don't seem to be introspecting at all. संजय गुप्ता जी जी क्या मैंने सुना नहीं आपकी बात तो दोबारा से
जी, मेरा कहना है कि दूसरे तरफ बहुत सारे विचार हो रहा है, आप लोग में भी कुछ विचार हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल विचार हो रहा है, विचार तो ये रहेगा, क्योंकि एक बात तो क्लियर कर दी जनता ने कि भले कोई किसी की पार्टी का नामो निशान छीन ले, मगर लोग भावनाओं से पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ते हैं, और सही और गलत ये भगवान भी देखता है। जो लोग ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं और ज्यादा बड़े बोल बोलते हैं, वो लोग अयोध्या में भी हार जाते हैं। प्रभु श्री राम को भी ये पसंद नहीं आया, तो ये बात उनको समझने की जरूरत है। और विद्रोही जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो पार्टी से या अपने साथियों से अलग हो जाते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो साथ रहते हुए भी अपना ही महसूस करवाते हैं मगर विद्रोह करते रहते हैं। तो अभी तो जो हमें पता चला, उन विद्रोहियों का पता चला जो अलग हो गए। अभी बहुत से विद्रोही ऐसे भी हैं जो हमारे साथ ही हैं, और उनको भी अभी सही से नहीं। तो संजय गुप्ता जी, जो आपके विरोधी हैं, जो एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए, क्या वो वापस आएंगे? और आपके लिए आपने क्या शिवसेना को मिलाने का एक जो रास्ता है, दरवाजा वो खुला हुआ है कि जो लोग गए हैं उधर वो वापस आ सके? देखिए, वापिस आने ना आने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि महाराष्ट्र की जनता किसको चाहती है, महाराष्ट्र की जनता किसको सम्मान देती है। तो महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि वो ठाकरे परिवार का सम्मान करती है, और उनके अलायंस को वो जीत मिली। जो सीटें बीजेपी के पास और हमारे अलायंस के पास 4142 आती थी, आज उनके पास कितनी आई है, ये इस बात का प्रमाण है। मैं बात उन विद्रोहियों की कर रहा हूँ जो विद्रोही चले तो गए, मगर कुछ विद्रोही आज भी पार्टी के अंदर रहते हुए जो जुड़े हुए हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं। पता नहीं चलता, जब वो भी बाहर हो जाएंगे तो एक नया समीकरण निकल के आएगा। Okay, Asif Bamla, the BJP in this entire alliance actually fought on the maximum number of seats. Could it have been more democratic in terms, or perhaps more adjusting with regards to the regional players? You see, let me submit you Shinde that factions strike rate is much better than yours. If you ask me, in the city of Mumbai, we were 2 lakh votes less than the your MVA. If you ask me, and if you ask me the percentage of votes also, of course, we have fallen. 1.5 percentage votes have totally reduced overall of the Bharatiya Janata Party. But you see, there are many issues to that. Of course, the Maratha Arakshan was one of the issues that was a spoiler for us. Then again, let me tell you, against all odds, still we are united. Now you see what is happening with the Shiv Sena. They're already their own alliance partners, without even speaking to each other, have already announced their names. They're not even bothered about this. We at least have our house in order. We have no problems whatsoever in and amongst them ourselves. And what are you talking about us? In their own election, in the Lok Sabha, their own Congress candidate rebelled, and he fought against their own Shiv Sena official candidate. Okay, let Sanjay Gupta respond. Sanjay Gupta ji, iska jawab diya. And again उनको कांग्रेस ने वापस ले लिया। तब शिवसेना ने कोई आवाज नहीं उठाई। तब नैतिकता कहाँ गई आपकी? आप लोग को तो तब उठकर बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, अरे भाई, आसिफ बामला जी, आपने बोल दिया। उम्मीदवार हार गए हैं। चलिए आगे भी लोगों की आवाज सुन ले। हाँ, चलिए बोलिए संजय गुप्ता जी। कुछ लोग हार करके भी नहीं हार मानते, और सत्ता से बाहर हो जाने के बाद केंद्र में सरकार हमारी है। आप लोग नहीं मानने तैयार हो। बात कर रहा हूँ, आप लोग ये मानने नहीं तैयार हो कि हमारी सरकार आ चुकी है, और हमारे मंत्रालयों के मंत्री भी काम कर रहे हैं। आप लोग आसिफ बामला, please be patient. Asif Bamla, you got your chance to speak. Let him speak now, please. Sanjay Gupta, go ahead. देखिए, कभी नंबरों की बात करते हैं, कभी वोट और परसेंटेज की बात करते हैं, मगर इनका जवाब दीजिए ना। आपकी के साथ बगावत हुई जो उसका जवाब दीजिए ना। महाराष्ट्र में एक सीट जिसके कारण आपकी सेना हारी, उसका जवाब दे तो दिया महाराष्ट्र की जनता ने आपको। अरे वो क्या उसके बाद हमें नहीं दिया। हम माने, हमने बड़ी बहादुरी से आपका तो नहीं है किया कि लोगों का कॉल आपके हित में है, लेकिन हर चीज खत्म नहीं, यहाँ नहीं होती है। अभी बाकी एक पिक्चर अभी बाकी है, चिंता न करें, आप देखोगे। ज्यादा ऊंचे बोल और बार-बार बोलने के कारण आज आप उछल आप लोग रहे, उछल आप लोग रहे। आप लोग को लग रहा है कि विधानसभा भी जीत गए आप, लेकिन आप ही का ये जीत और अहंकार जो है ना, आपका ये जीत और अहंकार आपको इस
चुनाव में आपको उसका भोगना पड़ेगा। आप समझ इतना मत लीजिए, चलिए आप, ये जो आप जितना लोग उछल जो रहे हवे हो। में है ना इस चीज के, मतलब क्या खा के आए हो, कौन सी गोली खा के आए हो आप? अब मतलब बोले जा रहे, बोले हमने जा रहे हार हो। मानी, हमने हार को किसने बड़े, बोलना है, किसने नहीं बोलना है, इसका ध्यान भी रख रहे हैं आप। हमने बदतमीजी बड़ा की भी हद होती है, बेचैनी की भी हद एक्सेप्ट होती है। किया जनता का कॉल। Let's shift अच्छी बात है focus कि to आप another कम से कम spokesperson who has EVM been को तो नहीं extremely, दोष दे रहे who's इस not बार। engaging in this kind of tutu meme. Brijmohan अच्छी ji, बात है कि आप EVM को तो नहीं दोष दे रहे the कम से question कम। certainly is that you fought on the least number of seats in this alliance, and Very your correct. strike rate, of course, wasn't the best. So you have just won one MP. But then this expectations that you should be accommodated in the central government as a cabinet minister may be misplaced, right? No, nothing like that, Maria ji. Actually, our party has decided to send our National Working President Shri Praful Patel ji for the cabinet, and because he worked as a senior cabinet minister in the previous governments, so we requested the NDA alliance that we want have a berth as a cabinet minister, because at the time we are not having that much number. I know about that logic. So let's wait how really these multiple moving pieces actually settle in. Thank you so much for joining us, Brijmohan Srivastava, Asif Bamla, Sanjay Gupta. Now we are being joined by Sanjay Nirupam, leader of the Shiv Sena. Sanjay Nirupam, thank you so much. Results के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है महाराष्ट्र में, दोनों कैंप्स में, महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो, इस तरह की एक्टिविटीज को क्या आप डैमेज कंट्रोल देख रहे हैं, महायुति खास करके? ये दोनों तरह की एक्टिविटी है। एक तरफ तो अति उत्साह है, उधर शिवसेना यूबीटी जिसको हम उबाठा कहते हैं, और कांग्रेस के तरफ एक शरद पवार जी वाली जो पार्टी है उसकी तरफ एक अति उत्साह है, और निश्चित तौर पर बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की जो एनसीपी है उसकी तरफ एक डैमेज कंट्रोल का एक प्लानिंग चल रहा है हमारा। तो ये एक दोनों तरफ इस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि अभी 3 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव है। तो अगर किसी को ये लगता है कि लोकसभा का चुनाव में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट रिपीट होने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। जो जीता है वो अगला इलेक्शन जीत जाएगा ऐसा भी नहीं, और जो हारा है अगला इलेक्शन वो हार जाएगा ऐसा भी नहीं। लेकिन दोनों पक्ष को एक एफर्ट करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के प्रश्न पर था, तो कोई एक पक्ष चाह रहा था बनाना है, दूसरा पक्ष आगे नहीं बनने देना है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें नरेंद्र मोदी मुद्दा नहीं रहेंगे, उसमें निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के मुद्दा रहेंगे, और महाराष्ट्र के मुद्दों के अलावा जो एक यहाँ का जो पॉलिटिकल जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, जो पिछले 2-2.5 वर्षों में बहुत तेजी से बदला है, दो पार्टियों में एक जबरदस्त फूट पड़ी, और दोनों पार्टियों के जो ग्रास रूट के लीडर्स थे वो अपने अपने नेताओं के खिलाफ विद्रोह करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, और उसके बाद एक सरकार बनती है। तो निश्चित तौर पर उधर जो बाठा की तरफ इस प्रकार का एक प्रचार किया गया कि भाई ये हमारे ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हमको सिंपैथी मिलनी चाहिए, और लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा किया गया। उधर शरद पवार जी ने भी कहा कि हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, हमारा सिंबल ले लिया गया, उनमें भी एक लोगों में अपने प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश। लेकिन ये गुस्सा, सहानुभूति बार बार नहीं मिलती। अगर ये गुस्सा था और गुस्सा निकला लोकसभा चुनाव में जो कि हमारे खिलाफ था, तो वो अगली बार भी ये गुस्सा रहेगा, इसकी गारंटी नहीं। Okay, so you are saying essentially that the anger which was sensed during the Lok Sabha elections will not be taken forward perhaps when the assembly elections happen 3 months down the line. Sanjay Nirupam, my last question to you, is there a sense that perhaps the BJP overplayed its cards, and, you know, because one sense that people did talk about was that it tried to break parties, and that proved to be counterproductive. Will it also play out in assembly elections? देखिए, कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी को तोड़ती नहीं है। ये जो एक गलतफहमी है, पहले उसको दूर कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर शिवसेना टूटने के लिए तैयार नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना कैसे टूट सकती है? ये तो एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं उनको कसमसाहट हो रही थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के अंदर। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि उद्धव ठाकरे उनकी योग्यता के हिसाब से उनको मौका नहीं दे रहे, इसलिए वो एक विद्रोही मूड में थे, और उनके साथ साथ कई विधायक भी शिवसेना के उद्धव ठाकरे के जो एक उनका जो एक अधिनायकवाद था उसके खिलाफ निकलना चाहते थे,
और वो निकल के आए। उधर शरद पवार जी की पार्टी का आप कहानी देख लीजिए। शरद पवार जी एक अपनी बेटी को स्थापित करना चाहते थे, जबकि ग्रासरूट लीडर सही मायने में अजीत पवार ही, भले तो हार गए, उनकी पत्नी हार गई, लेकिन ये पूरा महाराष्ट्र जानता है कि शरद पवार के बाद एनसीपी में अगर जो सबसे बड़ा जनाधार वाला नेता है तो वो अजीत पवार है। हाँ, लेकिन शरद पवार जी ने जिस तरीके से अपनी बेटी को थोपने की कोशिश की, उसकी वजह से अजीत पवार एक नाराज थे और उस नाराजगी की वजह से वो पार्टी तोड़ करके बाहर आ गए। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पार्टियों को तोड़ा है और उसकी सजा बीजेपी को मिली, मेरा मानना है कि ये थोड़ा गलत विश्लेषण होगा। हाँ, ये दोनों पार्टियां टूटने की स्थिति में थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसका लाभ उठाया कि आइए साहब हमारे साथ सरकार बनाइए। तो ये तो कोई भी पार्टी कर सकती है भाई, कांग्रेस भी करेगी। कांग्रेस के सामने भी अगर कोई पार्टी टूटने की स्थिति में होगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि वो पार्टी टूटे और उसका दूसरे जो टूटा हुआ ग्रुप है वो हमारे पास आ जाए ताकि हमारी ताकत बढ़ जाए। तो ये एक पॉलिटिक्स है और एक रियल पॉलिटिक्स है, और इस रियल पॉलिटिक्स में कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह मुझे नहीं लगता। All right, Sanjay Nirupam, really appreciate your time. Thank you so much for joining us. With that, it's a wrap from me. I'll be joining you in just a bit on the other side with Left, Right and Center.